Good evening and welcome to the class. Uh, Sneh, Harshit, Tanvi, Rutvi, Nidiksha, Dev, Devang, Aditya, and Mohdish. Welcome to the class. Comment about the streaming. And today is science. So साइंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में. We are discussing about the force. Okay. So तो लेट्स स्टार्ट. तो कल नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने डिस्कस किया था. ठीक है. डिफरेंट तरह के फोर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स. लेट्स सी कि फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना. जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो आई विल शो यू प्रेजेंटेशन. जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स और इसके इफेक्ट पे बात करेंगे. मैं गायब हो जाता हूं. तो वी विल टॉक अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट. तो फाइनली हमने फोर्स के टॉप टाइप डिस्कस किए थे. कांटेक्ट फोर्स के बारे में, है ना. कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो टाइप एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल. पहले कांटेक्ट फोर्स. गिव वन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. पहले कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल दो, है ना. कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं अगर तुम्हें याद हो. कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज दिस, है ना. लास्ट में कांटेक्ट फोर्स बताया था. कांटेक्ट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बताओ. कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. So give one example of contact force and one example of non-contact force. Comment fast. Comment fast. Give one example of contact force and one example of non-contact force. Give one example of contact force and non-contact force. Give one example of contact force and one example of non-contact force. Fast. I'm waiting. Give one example of contact and one example of non-contact force. One example of contact force and one example of non-contact force. Okay. So frictional force is a contact force. Yes, Nigam, correct. Frictional force is a contact force. Very good. And give one example. सभी लोग comment करने की कोशिश करें. Frictional force is not contact force, and non-contact forces. Non-contact forces and non-contact forces. Okay. Frictional force is a contact force. Give one example of non. सभी लोग try करो. Give one example of contact force and one example of non-contact force.
Okay. Gravitational force is non-contact force. Yes. Gravitational force is non-contact force. Yes. Everyone try to comment. यानी किसी ने पढ़ा नहीं है निगम को छोड़ के. Prithvi, gravitational force is a non-contact force. Yes. तो force that result from the interaction. Yes. Contact force में muscular force, non-contact force में gravitational force, magnetic force, electrostatic force. Very good. सबने पढ़ा हुआ है, सबको याद है. तो this is a contact force, है ना? And friction force is a contact force. Air resistance is a contact force. Normal force is a contact force. These all are contact force, है ना? Contact force, applied force, friction force, air resistance, and normal force. These all are contact force. Now, non-contact force में आ गया, जैसे बॉल ड्रॉप करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बॉल ड्रॉप करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं. ओके. अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखते हैं, इसमें बहुत कुछ तुम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो. साइंस में ये मोशन की तरह डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है. इसमें मगर अगर पुराने क्लासेस का जो भी नॉलेज है, जो भी प्रैक्टिकल अगर तुमने स्टडी किया है तो वो बहुत काम आता है. तो हम कुछ इसमें अलग अलग चीजें भी डिस्कस करेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है. फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स करता क्या है? तो फोर्स पहली चीज तो किसी चीज को मोशन में सेट करता है. इट सेट्स इन मोशन, है ना? फोर्स अगर ये प्लेग्राउंड दिख रहा है, प्लेग्राउंड में ऐसे, है ना, लोग प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बॉल बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं. तो इफेक्ट क्या होता है? ये बॉडी को, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? बॉडी को मोशन में सेट करता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज करता है और बॉडी के मोशन को स्टॉप करता है. तो ये मेरे ख्याल से एक कार्टून व्यू है फुटबॉल प्लेग्राउंड का, फुटबॉल प्लेग्राउंड का ऊपर से टॉप व्यू है. तो फुटबॉल प्लेग्राउंड में बहुत सारे लोग, जो बॉल है, बॉल दिख रही है ना, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, किक मार के बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं. तो फोर्स एक तो बॉडी को मोशन में सेट करता है और एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज करता है और एक मोशन को स्टॉप करता है और मोशन की डायरेक्शन में चेंज करता है. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स बॉडी को मोशन में सेट करता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज करता है, बॉडी का मोशन रोकता है ना, और बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, बॉडी का शेप में भी चेंज करता है. तो अगर ऐसे प्रेस करोगे, किसी चीज को दोनों हाथों से दबाओगे तो बॉडी का शेप में चेंज होगा. ठीक है, ऐसे ये दबाया मैंने, शेप में चेंज हो गया, इस तरह से. तो ये शेप को भी चेंज करता है. तो फोर्स के अलग अलग इफेक्ट हैं और उसके अलग अलग एग्जाम्पल है. ये तैयार करना, प्रैक्टिकली तैयार करना, सभी कुछ आना चाहिए इसमें. सो ये तो इन सबको हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स को देखेंगे. वी विल सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना. सो तो we have seen the general effect of force. Okay, now so this is the most practical thing. So we have seen the effect of force. Okay, so बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का डिस्कशन करते हैं. तो वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ फोर्स. वेट अ सेकेंड. जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. वन मोर प्रेजेंटेशन. वेटिंग सेकेंड. Just going through. I've explained this कि force is basically push or pull, है ना. Push or pull upon an object is force. This is push and this side is pull. तो यहाँ पर push या pull बॉडी को मोशन में लाता है. तो this is बॉडी को मूव करेगा, एक इफेक्ट ऑफ हो गया. अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो
ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इस पे अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो फोर्स इस पे है कि नहीं है। अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो फोर्स इस पे, इज देयर एनी फोर्स और नॉट। इफ समथिंग इज स्टेशनरी, सपोज दिस इज बॉडी इज स्टेशनरी, तो इस पे कोई फोर्स है कि नहीं है। जस्ट कमेंट इस पे कोई फोर्स है कि नहीं है। Force is acting on it or not. Force is acting on it or not. Force is acting on it or not. Just comment. You can reply on WhatsApp also. Force is acting on it or not. Is there any force on this stationary ball? Is there any force on this stationary ball? Yes. Which one? Which one? Just comment, Nigam. Which one? कौन से forces है? अगर कोई stationary है तो कौन से forces है? Yes, there's force. There's force. Yes, force is acting. Yes, force is acting. Force is acting. Force is acting. Yes. Now, एक तो gravitational force act कर रहा है downward direction में, एक तो gravitational force act कर रहा है downward direction में, and एक force act कर रहा है upward direction में. That is a normal force. So these all forces are balanced. These all forces are balanced. ठीक है, these all forces are balanced. तो force is acting, yes, these two forces, gravitational force and normal force is acting, but these are balanced. ठीक है, these are balanced. इधर भी force act कर रहे हैं, but forces acting on the object does not imply that object is in motion. है ना। ऑब्जेक्ट अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो ये पक्का नहीं है कि फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो पक्का नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। फोर्स बैलेंस भी हो सकते हैं, फोर्स बैलेंस भी हो सकते हैं। बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है, बैलेंस है, तो बैलेंस फोर्स अगर होगा देन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये पक्का नहीं कि इस पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इस पे नेट फोर्सेस बैलेंस्ड है। ठीक है, जैसे हमने इसको पुश किया तो इट विल मूव, फोर्स को पुश किया इट विल मूव, it will move, it will move, is it clear? It will move. So force किया it will move. Now ये तो पुश फोर्स लगाया, ये इधर से ऐसे फोर्स लग रहा है नॉर्मल और ग्रेविटेशनल, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, है ना, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय द, है ना, सपोज दिस इज, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसको मैं फिर से दिखाता हूं, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे नेट फोर्स जीरो है ना, नेट फोर्स जीरो है। तो अगर टू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है इस पे। तो बेसिकली अगर बैलेंस्ड फोर्स हो, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एट यूनिफॉर्म मोशन इफ नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट मोशन में कंटिन्यू होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या स्टेशनरी होगा। ठीक है, या तो रेस्ट में होगा या कंटिन्यू वेलोसिटी से मूव करेगा। दिस इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इन दिस प्रेजेंटेशन आई थिंक ये काफी, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी कोई भी हो सकती है। ठीक है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये तो हम देख चुके हैं, that I've explained. So ये हो गया जनरल इफेक्ट ऑफ फोर्स, हो गया, ये हो गया। नाउ उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक बार स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ हमें इसमें पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। हमने बैलेंस और अनबैलेंस्ड पे बहुत कुछ देखा है। आखिरी में एक और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन है, वेट अ सेकेंड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड पे एक और प्रेजेंटेशन लाइव देख लेते हैं। जस्ट सी द लाइव प्रेजेंटेशन, दिस इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, है ना। तो दिस इज अ वेरी लाइव प्रेजेंटेशन, लेट्स सी दिस। सो this is a live presentation. Now suppose
ये दीज आर द टू पर्सन एंड ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये पुल, बट ये पुल कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, नाउ इफ दे आर इन रेस्ट, दीज टू पर्सन आर इन रेस्ट, ये इसको इधर पुल कर रहा है ना, बीच में एक रोप है, रोप से ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ओके। सो हम अगर इसको प्रैक्टिकली करेंगे और जस्ट स्टार्ट पुलिंग ईच अदर, ये बस। सो व्हाट कैन यू से, ये दिस इज द मैन एंड दिस इज द बॉय, तो किस पर्सन पे फोर्सेस आर बैलेंस्ड और किस पे अनबैलेंस्ड है? मैन पे किस तरह का फोर्स है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? जस्ट टेल मी प्रैक्टिकली, मैन पे फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? जस्ट कमेंट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मैन पे फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? Just comment man balanced or man unbalanced. I will make in form of questions. Wait. Suppose we have two options. Man पे balanced force है या unbalanced है? This is our first question. Just comment with man पे force balanced है या unbalanced है? Man पे force balanced है या unbalanced है? Man पे yes, man पे balanced है। और if we talk about the boy, हाँ, मैन पे फोर्स बैलेंस्ड है और यहाँ पे इधर रोप इसको पुल कर रही है और इधर जहां पे बैठा है इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। मैन पे बैलेंस्ड फोर्स है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और रोप का फोर्स ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स, ही इज इन रेस्ट। एंड व्हाट यू से अबाउट द बॉय, व्हाट यू से अबाउट द बॉय, बॉय पे जस्ट आई विल रब इट, व्हाट यू से अबाउट द बॉय, बॉय पे फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बॉय पे, सेकंड क्वेश्चन आई एम चेंजिंग इट, सेकंड क्वेश्चन बॉय पे, जस्ट कमेंट फॉर बॉय, है ना, जस्ट कमेंट फॉर बॉय, कमेंट फॉर बॉय, बॉय पे मैन बैलेंस्ड, बॉय पे अनबैलेंस्ड, यस, बॉय पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, बॉय पे तभी बॉय मूव कर रहा है, इट इज मूविंग, दिस इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो व्हाट डू अ फोर्स डू, व्हाट डू अ फोर्स डू, है ना, व्हाट डू फोर्स डू, जैसे फोर्स लगाते हैं तो किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लाता है ना, किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लाता है। जैसे यहाँ पे स्ट्राइकर वाला एग्जांपल लिया था, तो स्ट्राइकर रेस्ट में था, पहले स्ट्राइकर रेस्ट में था, फोर्स ने क्या किया, रेस्ट से इसको मोशन में ले आया। और यहाँ पर क्या था, अगर मोशन में स्ट्राइकर होगा तो फ्रिक्शन उसको रोक देगा, फ्रिक्शन उसको रोक देगा, ठीक है, ये फोर्स करता है। या फोर्स है ना, किसी का मोशन स्टॉप करता है, ये फोर्स का मोशन, फोर्स ऐसा मोशन को स्टॉप कर रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स बेसिकली या तो रेस्ट को मोशन में लाता है, मोशन को रेस्ट में लाता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, शेप में चेंज करता है, तो दीज आर द इफेक्ट, ठीक है, दीज आर द इफेक्ट। नाउ तो फोर्स बेसिकली, फोर्स एक्सेलरेशन को कॉज करता है, एक्सेलरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ सपोज अगर ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं बट both are not moving, both are not moving, then the forces are balanced, then the forces are balanced। अगर both are not moving, if there is tug of war and both are not moving, then forces are balanced। if you pull something, it is moving, it is in rest and then it is moving, you apply the force and this is moving, so this is just a moment, if this moves then force are unbalanced। फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है, एक फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, अभी इट इज बैलेंस्ड, इफ इट इज नॉट मूविंग इट इज बैलेंस्ड, इफ इट इज मूविंग इट इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। सो इन दोनों सिचुएशन में देयर इज नो नेट फोर्स, इफ दीज आर इन रेस्ट तो इनके फोर्स फ्रिक्शन के साथ बैलेंस है, नो नेट फोर्स, नो एक्सेलरेशन, बैलेंस्ड। अगर नो नेट फोर्स होगा, नो एक्सेलरेशन होगा, बैलेंस्ड। इफ नेट force then the thing will move, if net force then the thing will move, है ना। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है then there is no net force, अगर ये इसकी स्पीड चेंज हो रही है that means there is unbalanced force, okay। So I have told this,
So if it is moving with, if the boy is moving with constant speed, अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट है, then you will also say that forces are balanced. तो अगर ये बॉय मूव कर रहा है, but if it is moving with constant speed, then the forces are balanced. ठीक है, ये these are the, तो सारे एक्सपेरिमेंट को समराइज करें, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सब सारी चीजें. ओके, so we have seen the effect of balanced and unbalanced force. Okay, now we will study a very important thing that is called free body diagram, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम. इसमें बहुत सारी चीजें, और बुक में पढ़ना बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें हैं बुक में, इस ज्यादा प्रैक्टिस का नहीं है, मगर बेसिक चीजें हैं. फिर हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे. आई थिंक फर्स्ट लॉ वी हैव डिस्कस्ड. So after free body diagram, we will discuss first we'll discuss free body diagram. One more presentation. Now, so yes. Now, अब एक बहुत important discussion करेंगे. We will take 4 situations. A box is at rest on the table. A rightward force is applied to the box in order to move it across the table with rightward acceleration. Ignore air resistance. A box on the table is moving towards the right at constant velocity. A skydiver descending with constant velocity, and egg freely falling from nest in a free. तो these are the situation जिसका हम free body बनाएंगे. तो just understand, first a box is at rest on the table. So a box is at rest on the table. So this is the box. It is rest on the table. In a free body diagram, we will show all the forces acting on the object. जैसे suppose this box is in rest on the table. तो इस पे तो gravitational force लगेगा downward direction में, like this, and normal force will be in upward direction. Normal force will act in upward direction, and this is in rest. ठीक है, these forces are balanced. Net force is 0. So this is free body diagram. This is free body diagram. तो actually में इसको ऐसा दिखाते हैं, and when we draw it on a paper, I will show it on the paper. Presentation से बाहर निकलता हूँ. Just try to make the free body diagram. मैं roughly बनाता हूँ. यहाँ पे तो एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है. I am taking the same situation. A box is at rest on the table. Same situation. So first we will make a table surface. आप कॉपी पे कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम? जैसे कोई भी प्रैक्टिकली, अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है, a box is rest on the table, तो ये तो उसका कार्टून डायग्राम हो गया, है ना, कार्टून डायग्राम हो गया. दिस इज अ कार्टून डायग्राम, और प्रैक्टिकली तुम्हें लाइव दिखाई देगा. यू कैन सी लाइव, देख सकते हो, a box is resting on the table. मगर उसको कॉपी पे कैसे बनाते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री बॉडी डायग्राम. सो वी विल मेक अ टेबल लाइक दिस. अभी तुम्हें इसी की प्रैक्टिस करनी है. विल मेक अ टेबल लाइक दिस. मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, जिसमें कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, but I am using the colors. This is our block. This is our block. This is our block. ठीक है. तो see this. Now think practically. This block is applying a force on the table in downward direction. See, अगर कोई भी ब्लॉक लोगे, वो टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रेस करेगा. इट विल प्रेस द ब्लॉक.
thing in downward direction. And block is pulling the table in downward direction, and table is pushing the block in upward direction. These two are the forces. Okay, block is pushing the table in downward direction, and this is block. This blue colored block is pushing the table, white colored table in downward direction. And when you push something, the when you push the table will push you in upward direction. Block is pushing the table in downward direction, and table is pushing the block in upward direction. So सबसे पहले मैं तुम्हें न्यूटन्स थर्ड लॉ बताऊंगा. अभी न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ करेंगे, बट पुराने टाइम में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसे ऑर्डर में दिए गए थे. दैट इज ट्रेडिशनल. बट किसी भी सिचुएशन में तीनों लॉस एटलीस्ट फर्स्ट और थर्ड लॉ एक साथ लगता है. तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द अदर ऑब्जेक्ट विल अप्लाई अ फोर्स ऑन यू. सिंपली टेक सपोज अगर ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और एक वॉल को पुश करो. आई थिंक आई विल शो द लाइव थिंग्स. एक मिनट, जस्ट आई एम शोइंग द लाइव थिंग्स. जस्ट सी इफ वेट अ सेकेंड आई विल. There's a wall behind me, है ना. If you push the ball, if you push the wall like this, ऐसे wall को push करोगे तो you can feel the wall. If you push the wall, wall will push you. If you push the wall, if you apply a force on the wall will apply force. You can feel this. Otherwise, you will not. You are applying a force on the wall, and wall is applying a force on you. इस तरह से, ठीक है. So these are the situation. You are applying a force on the wall, and wall will always apply force on you. Okay, see, this is the situation. Suppose this is wall, and this is your hand. Just try to make these rough diagrams. This is just like I'm just making. Just look like feet, but this is your hand. Look like feet. Okay, and this is my hand, and my hand will press the wall like this. Is it clear? And this is a contact force because this is known as normal reaction. इस यहाँ भी ये भी normal reaction है. This is a contact force. You can represent it by N. And obviously, the white colored wall will push me. White colored wall will push me like this. If this is my hand. Okay. Table will apply a force on, block will apply a force on table in downward direction, and table will apply a force on block in upward direction. This is normal contact force. And then there is another force. Which is applied by the earth. That is different. Suppose this is your earth. And earth will pull the block in downward direction by force W. And block will pull the earth in upward direction by the force. And this will act on the center of earth. ठीक है. Every force is an action-reaction pair. So this is more about the feeling. So I will show you one more presentation on this, on Newton's third law. ठीक है. Then I will show Newton's first law and second law. First I will show presentation on Newton's third law. This is very important.
Oh, this is, let me see. Third law of motion. First I will show live presentation, then it. I will have 2 or 3 presentation on it. Wait a second. I have one live presentation on Newton's third law. First I will discuss Newton's third law, then I will discuss first law and then second law. A little bit reverse order. Newton's third law. Wait. I have another one. So see these presentations. What is Newton's third law? What is Newton's third law? Newton's third law says to every action there is always an equal and opposite reaction force. Newton's third law says to every action there is always an equal and opposite reaction, or the forces of two bodies on each other are always equal and directed in opposite direction. So these are the practical example जहाँ पे Newton's third law valid, मतलब जो भी तुम practical example लोगे हर जगह Newton's third law लगेगा. So these two are the most appropriate use of Newton's third law. So what is इसमें इसको एक situation में when you push a block by hand, जैसे wall का example लिया था, block will push you in opposite direction. Block will push you in opposite direction. Is it clear? I think it is visible. Block will push you in opposite direction. You will push the block in forward direction and block will push you in opposite direction like this. This blue force is acting on the hand and this ये जो red force है ये acting on the block always. Now we can take few more example. When you pull something, when you pull something, that यहाँ पे if you are pulling something, you are pulling this surface and this will pull you. Is it clear? If you pull this thing, this will pull you. When this is your feet and you will push the floor in downward direction. And floor will push you in upward direction. This upward force is on the yellow shoes and this downward force is on the floor. The force is always always exist in action and reaction pairs like this. So these are, अगर यहाँ पे देखें rocket में देखें, so see this is rocket and ये जो fuel है, fuel पे ऐसे force लग रहा है. Rocket is pushing the fuel in backward direction. Rocket is pushing the fuel in backward direction. It is push, ये fuel को exit कर रहा है, sorry. And fuel will push the rocket in forward direction. Similarly, here this person is pushing something in backward direction. So it is like this. See this, I think in this example, see, if you're pushing something in this direction, so this something will push you in backward direction. अब जैसे space में अगर तुम्हें move करना है, space में if you want to move, क्योंकि space में only third law is valid, space में there is no gravitational force, space में earth will not pull you. If you are in space, the earth will not pull you. I think you are understanding. If you are in space, the earth will not pull you. So what will you do for the movement in space? अगर तुम्हें space में चलना है तो तुम क्या करोगे? You have to throw something, because there is no another way. So this person is throwing. If you throw something, suppose this is hand. If you are throwing something, by throwing you will apply force on this object like this. This object will apply equal and opposite force on you. If you apply a force on the object, on the block,
this block will apply equal and opposite force on yourself. Similarly here he is applying a force on this thing, and this is pushing it in backward direction. Similarly here in this presentation, यहाँ पे दूसरा वाला force नहीं दिखाया है. This rocket is pushing the fuel in backward direction, and fuel is pushing the rocket in forward direction. These all are examples of Newton's third law. I think you understood. There is a equal and opposite force, and they act on different object. What is Newton's third law? Force cannot exist without its reaction. जब भी तुम किसी चीज पे फोर्स लगाओगे उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन तुम्हारे ऊपर हो गया. तुम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, जैसे तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और इसका रिएक्शन किस पे लगेगा? हाथ पे लगेगा. रिएक्शन तुम्हारे ऊपर रिएक्शन लगेगा. ठीक है. I think you understood the Newton's third law by different practical situations. I will show you few more practical situations so that you can understand it properly. I have one more presentation, more about Newton's third law. See, this is also more about Newton's third law. See this. Just a moment. Mathematically, I will discuss later. I will discuss after Newton's second law. Leave it. I have one more presentation on Newton's third law. Yes. I have one graph presentation. See. Third law of motion. Every action. एक कुछ और प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिकली और देख लो. वैसे तो इसको प्रैक्टिकली समझना चाहिए, बट आई कांट एक्सप्लेन प्रैक्टिकली, सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये स्टेटमेंट सबको पता होगा. व्हाट हैपन व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो ये मैंने दिखाया. ये दिस बॉल विल पुश द फ्लोर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, वो अलग से दिखाएंगे. This ball is pushing the floor in downward direction, and floor is pushing the football in upward direction. This force is on the table, and this force is on the object. These two are action-reaction pairs. Anyone you can say action and other will be reaction. किसी को भी action बोल सकते हैं, इसको भी action बोल सकते हैं. एक action होगा, दूसरा reaction होगा. I think you understand it. Every action has equal and opposite reaction. This is the Newton's third law. When two objects interact, force on each object are always in action-reaction pairs. Take few more example. Like this frog is moving. ये भी rocket की तरह example हो गया. He is pushing the water in backward direction, and water is pushing the frog in forward direction. Lot of example, lot of science is lot of practical, not theory. So I am not I am not force you to writing the theories, because rules are very few. You have to understand Newton's third law practically Newton's third law समझना होगा, क्योंकि अगर नोट्स बना के लिख लोगे तो स्टेटमेंट तो जरा सा है. ठीक है. You have to understand practically. You have to think more practical situation. You have to do some practical at home so that you can feel Newton's third law. ठीक है. Similarly, so I am showing this. So this swimming of frog is an example of again I am showing this. This frog is pushing the water in backward direction. This force is in water, and this forward force is in frog. Similarly, this fly is pushing the air, and an upward force will act on this fly. So third law of motion is every action has an equal and opposite reaction. Now few more example. This is your favorite example. This is a revolver. When you इसको जब revolver को चलाएंगे, when you fire a bullet from revolver, see, this is bullet from revolver. This bullet will apply a force. Basically,
this bullet will apply a force on this pistol in backward direction, and you have to apply a force, your hand have to apply a force on pistol in forward direction. जैसे बुलेट, फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। जी तुमने पिस्टल से बुलेट फायर किया, तो इस बुलेट ने इस पिस्टल पे बैकवर्ड फोर्स लगाया। अब अगर सिर्फ इस पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो पिस्टल शुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर सिर्फ एक फोर्स लगेगा तो दिस शुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर तुम्हें हाथ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है जब ये बुलेट निकलती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है। तो अगर तुम्हारा हैंड टाइट नहीं है, तुम्हारे हैंड ने बुलेट इस पे पिस्टल पे फोर्स नहीं लगाया, तो योर हैंड विल पुश बैक। सो यू हैव टू कीप इट टाइट, अदरवाइज यू विल पुश बैक। तुमने फिल्मों में देखा होगा कि पिस्टल से ऐसे फायर करते हैं तो ये हमारा हैंड पुश बैक होता है। तो यू हैव टू अप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। So this is force by the bullet on the gun. This is force by the bullet on the gun, and this is force on the gun. This is by the hand, or you can say this is force by the gun on the bullet. ठीक है, यहाँ पे बुलेट गन पे लगाएगी और गन को बुलेट पे लगाना पड़ेगा। इधर हैंड का नहीं दिखाया, ठीक है। ये जो गन है वो हैंड पे बैकवर्ड फोर्स लगाएगी, हैंड इस पे फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दिस इज These are equal and opposite. Acceleration की बात बाद में करेंगे. Second law we will discuss later. So I have shown enough example of Newton's third law. Okay, I have enough example of Newton's third law. So I have shown the action-reaction pair. See this situation. See this situation. See this situation. This I have shown this gap. सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए कि यहां पर ब्लॉक इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है और सरफेस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रही है। दिस इज सरफेस। सो दीज टू एंड्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट द ब्लॉक, so there's a question for you. There's a question for you. Wait. Suppose this is force number 1. This is force number 2. This is force number 3. Is it clear? There's a question. Force acting on block. I have shown all the force. Option A, 1 and 2 are acting on block. Option B, 1 and 3 are acting on block. Option C, 2 and 3 are acting on block. And D, 1, 2, 1, 3, 2, 3, plus 3 options sufficient. Just comment fast. Which forces are acting on the block? Which force are applying on the applying on the block, or you can say yes, which forces are acting on the block, applied on the block? 1 और 2 ब्लॉक पे लग रहे हैं, 1 और 3 लग रहे हैं, 1 और 3 लग रहे हैं, and या 2 and 3 लग रहे हैं. Comment it fast. You can say this is first question. You can say this is first question. Comment fast. Comment fast. 1 and 3.
Everyone should comment. Okay, I have seen the comment. वन, थ्री किस पे लग रहा है? थ्री किस पे लग रहा है? वन, देखो यहां पर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखाते हैं. तो यहां पर ये जो व्हाइट वाला है, सी द सिचुएशन. इफ यू प्लेस अ ब्लॉक ऑन द टेबल, ठीक है, फील प्रैक्टिकली. इसका आंसर तुम थियोरिटिकली नहीं दे सकते, यू हैव टू फील. दिस दिस सरफेस is pressing the block in upward direction. ये सरफेस अगर तुम ब्लॉक उस पर रखोगे, ब्लॉक उस पर रखोगे, ब्लॉक will press the surface in upward direction. You can feel that. You can practically feel that. See, I have this matchbox. See, you can do the practical. If you have a surface like this, and put a matchbox in this matchbox. This surface will press the block in upward direction. Surface, agar surface you can, yeah, surface will press the block in upward direction. Press the, and matchbox will press the surface in downward direction. This matchbox, or you can put on hand on the surface. Is it clear? सो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे ये जो सरफेस है, ये तुम्हारे हाथ पे किधर फोर्स लगाएगी? ये तुम्हारे हाथ पे फोर्स किधर लगाएगी? इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और तुम्हारा हाथ सरफेस पे किधर लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो डाउनवर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? अगर हम डाउनवर्ड फोर्स की बात करें, है ना, फिर से अगेन, इफ यू टॉक अबाउट द डाउनवर्ड फोर्स, ये किस पे लग रहा है? थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? जस्ट अनदर क्वेश्चन, उसका आंसर. थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? टेबल पे लग रहा है या ब्लॉक पे लग रहा है? कमेंट इट, टी और बी. थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? दिस इज फोर्स नंबर 3, दिस नॉर्मल रिएक्शन, है ना. दिस फर्स्ट थर्ड फोर्स इज ऑन द टेबल और ब्लॉक. थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? दूसरा क्वेश्चन मैंने उसको छोड़ दिया अभी. ये थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? व्हेन थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? अच्छा, आई एम श्योर, जस्ट डू थिंक प्रैक्टिकली. थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? सी, थर्ड फोर्स किस पे लग रहा है? ये जो थर्ड फोर्स है, ये किस पे लग रहा है? टेबल पे लग रहा है या ब्लॉक पे लग रहा है? ये जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है, इट इज एक्टिंग ऑन टेबल, इट इज एक्टिंग ऑन टेबल. तो हाउ द आंसर कैन बी बी? थर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन टेबल. आई एम आस्किंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. Yes, third force, Ruthvi, third force is acting on the table. So my question is force acting on the block. Third is not acting on the block. So answer is not B. This one force is acting on the block. This one force is acting on the block. This third is this one. This third force is acting on the table. So please change your answer. Now please change your answer. Delete your answers and now. So take another chance. I am giving you another chance. So have you understood? This third force is acting on the table. The simple example. Third force is acting on the table. So again, which forces are acting on the block? I am asking which forces are acting on the block. Which forces are acting on the block? Which forces are acting on the block?
Now, then again comment, change your answer. A, B or C? A, B or C? A, B or C? Yes, 1 and 2. Yes, 1 and 2. 1 and 2. Okay. So 1 and 2 are acting on the block. 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 Okay. 1 and 2 are acting on the block. Yes, A is the answer. 1 and 2 are acting on the block. Now another question, you can say this is. Now, okay, so 5 minutes more. Instead of taking test in last, जो है, I have few different planning, है ना? I have different planning कि I should take the live test जो है, जैसे लाइव टेस्ट करके जैसे लास्ट में हमने ये टेस्ट लिया था, एक सेकंड. अब जैसे यहाँ पे बता दिया है ना, इसको √32 इंटू ये, जैसे ये है, तो यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे चेक हो जा रहा है. आई थिंक जैसे 2-3 बच्चे टेस्ट देते हैं, तो मैं लाइव इसका, क्योंकि टेस्ट वेस्ट की कॉपी चेक हो नहीं मतलब इतना टाइम नहीं मिलता, मगर उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, इसमें कोई गलती नहीं होती, तुम्हें गलती देखनी है ना. टेस्ट का प्लान लास्ट में कुछ करते हैं, मार्क्स वार्क्स का झंझट रहता है, तो उससे बढ़िया लास्ट में जो क्वेश्चन दिया, तो ऐसे ये तुम्हें चेक करके बता दिया ये गलत है या सही है. और ठीक है, आई कैन गिव यू मार्क्स. ये एक मिनट, इफ आई कैन, तो लाइव ये, इसमें अगर ऐसे मैं टाइप कर दूं तो जैसे 1 मार्क हो गया, ये हो गया, तो दिस इज लाइव टेस्ट. ये मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चलो बताता हूँ. जैसे मैंने ये देखो, ये कैसा रहेगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्योंकि पुराने टेस्ट पेपर चेक करने में आज मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो ये मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है. इसमें बच्चे का गलती भी पता लग रहा है क्या है और कितने मार्क्स मिलेंगे. तो लाइव टेस्ट, क्योंकि ज़्यादा तुम्हारे टेस्ट पेपर नहीं होते, 4 और 5 होते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, देखता हूँ सी इट इज़ इफेक्टिव और नॉट. 5 मिनट मोर, और बहुत जल्दी हो जाता है. जैसे ये निगम का पेपर है, लाइव चेकिंग कर रहा हूँ, ये इसमें जो करना था, इसने वैल्यू निकालनी नहीं थी, इसको 26 की पावर, क्या क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, दिस वाज द क्वेश्चन, √26 3, तो √26 इंटू 3, इसकी वैल्यू निकालनी थी क्या, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी. 3√26, 3√26, so you can find the value, no problem, but it is sufficient. It was the question की, wait, 3 इसको सिंपलेस्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था, तो इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते. 3√26 है, तो 3√26 13 वैल्यू निकालनी. लेट्स सी दिस. तो दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट, मगर इसे मैंने लिखना नहीं था, इस तरह से लिखना नहीं था, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था. लो बैटरी, ये एक्चुअली में ये सही है, मगर इसको मैंने ऐसे लिखना नहीं था. तो फिलहाल आई विल एक्सप्लेन इट. देखता हूँ ये जल्दी हो जाता तो आज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. आई विल रिप्लाई विथ, आई थिंक ये करना ही था, आई विल रिप्लाई विथ मार्क्स 1 हो गया, तो दिस इज मार्क्स 1 लाइव चेकिंग, सो दिस इज 1. और देखता हूँ और किसका है. सेकेंड पेपर ये है. हाँ, ये करना था. यस, 26 की पावर 1/2 इतना सफिशिएंट है ना.
ये 2√13 26 की पावर, या √2 लिख लेते हैं, √2 और √13, तो ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है, मुझे इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था, तो आई विल गिव, फिर इसको 2 को और 13 को अलग अलग भी लिख सकते थे, तो दिस इज लिटिल बिट करेक्ट, सो I will give 2 marks for this. Not 1 mark, 2 mark for this. And this is checked. तो ऐसे सबका क्लियर हो जाएगा, बहुत कम बच्चे करते तो इसमें कम बच्चों में ये एक चेक हो गया, दूसरा चेक हो गया, तीसरा देखो, तो सबका तुम देख भी लोगे। तो ये इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, ये भी वही निगम की तरह किया है ना, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो आई विल रिप्लाई विथ 1 मार्क्स, वैल्यू नहीं निकालनी थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मगर ये मुझे चाहिए नहीं था। आई विल रिप्लाई विथ 1 मार्क्स, चेक हो गया। देव का हो गया, ऋत्विक, 4 ही तो पेपर है, तुम्हारा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 36 से 30, ये भी वैल्यू निकालनी थी, तो दिस आई विल वैल्यू, तो देव इज 2, अदर्स आर 1, क्योंकि वैल्यू निकाली ठीक, मगर मुझे वैल्यू निकाली नहीं थी, मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था। सो ऑल आर चेक्ड, ये पेपर चेक हो गए, ठीक है, ऐसे ही पुराने वाले चेक कर लूंगा किसी दिन बैठ के। आई विल चेक 1 मोर, इसमें मगर ज्यादा है, ज्यादा में टाइम लगेगा, है ना, ज्यादा में तो जिसको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें टाइम लगेगा, तो कल का तो चेक हो गया 111 ऐसे लिस्ट। I will see that if it is effective or not. For very few paper is effective, but ज़्यादा में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर 3 और 4 है तब ऐसे कर सकते हैं, लेस देन 5 में ऐसे कर सकते हैं, बट पुराने कुछ पेपर मोर देन 5 है, 1 2 3 4 5 6 में नहीं कर सकते, 7, ओके, 7 में नहीं कर सकते, 7 में बहुत ज़्यादा हो गए। चलो लास्ट ये वाला तो चेक हो गया, 3 बच्चों ने दिया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो what to, so this paper is checked, this paper is checked, okay। आज तो चैप्टर का, मोशन के पुराने चैप्टर का आई विल टेक टेस्ट, हाँ, पुराने मोशन का मैं टेस्ट ले रहा था, बहुत सारे टेस्ट, सो टुडे इज देयर, हाँ, तो इसमें ऑब्वियसली टेस्ट मैं मोशन से ही लूंगा, है ना, टेस्ट में मोशन से ही लूंगा, तो इसमें तो अभी टेस्ट वाला कुछ हुआ नहीं है, तो टेस्ट पुराने चैप्टर का लूंगा। यस, आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट, और but this method is not effective, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो टाइम लगेगा। आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम एंड गिविंग यू टेस्ट इन 5 मिनट। टेस्ट तुम करते हो, वो प्रैक्टिस के लिए है, चेक करूँ ना करूँ उससे मतलब नहीं है, यू कंसंट्रेट ऑन टेस्ट, कभी चेक कर दूंगा